Okay, click on all pipelines. Where is There, all pipelines? yeah, all pipelines. There is a drop down on the top. You can see just bottom that automation and validation pipeline. All pipelines. One more able to see all pipeline. I can see all deals. No, no, no. Just on the top of all deals. Then just go left a bit right, a bit right. Yes. Okay, click on operation pipeline. Okay. Okay, now click on this Kanban view. So just left to the operation pipeline, there is an icon. Yeah, just right to that. Yes. Okay. Can you cross check all the stages that we have created? Okay. You can scroll it vertically as well. I also need one more assigned to managing partner. I think that has also been added. Okay. Oh, assigned to managing partner. There's one more that needs to be there. Assigned to managing partner for closure. Okay. Okay. And this will be after before close, right? Right. Okay. Okay. We'll do that. Or even we can do it right now. Can Okay. you mute because I Let think me. Yeah, we can do it right now. yes, exactly. So just click on this action button on the top. Go to add pipeline automation. Yeah. Now go to configure. Just हाँ जी मैम। अभी आज पिकअप नहीं है वो टाटा लेन डालेंगे ये मैं बोल रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ actually I think the screen is stuck. So can you please Sure, share it? sure. Here you go. Okay. So assigned to managing partner for assistance I have. How do I move it above? Yes, Like, exactly from there. yeah, I can do it. How do I save this? It's already saved. You there is a button on the. Um, I'm very confused in Save, left yeah. and right. Yes. All right. Can you tell us how to use this? What this The operation stages? pipeline. All right. Yes. So yeah. So how it will going to work is now the contact will get created. Okay. Give me a So demonstration. Guide me how to do it. So suppose I am a sales user and I need to assign this to operations. Ashna is an operations member. How do I do it? okay. So go back to the sales and inside of that sales go to the Mhm. deals. Okay. There is no deal right now. Okay. Mhm. So Mhm. first we have to create a deal. Okay. Now in that scenario, this is a whole different scenario as per the last meeting that we have discussed. Uh-huh. So we have to create a deal first. Uh-huh. So just create, yeah, click on that, create deal. See, this is the field where we can fill all the details. We Mhm. can also edit these fields, right? So if we Mhm. want any other field that need to be added while filling the details, we can do that as well. अच्छा ठीक है. Let's say I need to create create a mutual fund portfolio. Mhm. Create a mutual fund IIM. Let's say for Puneet. So you can just write a MFIN for Puneet. No need to write create R. Like this is a deal, so It needs to be the created. name can be, yeah. Okay. It's asking like in which pipeline you want this deal to be because we have created two different pipelines, right? So you Perfect. have to select operation and then Okay. in which stage this deal will should be. Case assigned to operations. Okay.
is there any specific amount that you are assuming that No, you no, can not at the moment. So I will not leave have it? any amount. Leave it for now. Currency, that is something which is updated. Now, when you are expecting this deal to be get closed, Okay, I can have that. So I need this to be closed maximum by today, actually. So ideally, I would want the pipelines deals which are communicated in the morning to be closed by the same day. So we can have the so same you, day. yes, yes, on 8th. Okay. Now, who will be the owner of this deal? All right. So I assign it to operations. Right. So deal owner means the person who's required to close it. Correct. Exactly, exactly. Okay. Deal type new business, or let's say new business. Yes. Priority is How much high. priority of this deal? Yeah. Now, Associate. these are the like this is not important that you need to fill, but if any contact is connected with this deal, you can definitely add. So it basically two different objects. It's the association of two different objects. How it basically works is, Understood. so for a single company, there can be multiple Yeah, contacts who is in connection with you, right? obviously. How So about add timeline activity from Puneet Costa to this deal? What does this mean? we can leave it. So it's a kind of like you can say that there is a lot of different activities that you perform. So if you are going to take this, it will just have a proper, tracking of that. So Hmm. that no need of that doing that. We can add company as well if there is any company Understood. that exists. Understood. Yeah, Okay. actually we have So created I this do this test. If create, you, yeah, and yeah, it's going to pop up. How does this yeah. work Let under me let me tell you. Ashna's Let me tell you. control? So How does Ashna just access? let's go one by one. This is a detailed page of the deal, right? Hmm. Here you can see all the details. Hmm. So just to give you a brief structure, in the top left corner, this is the basic information, like this is the name of the deal, when you're going to close, in which stage and pipeline this deal is. Hmm. Then about this deal, these are other properties, like who's the owner, who is the person who is last contacted with this deal, which deal is this. So we can edit this as well. If you want any other property to be popped in this about this deal option, then we can edit this as well. Okay. Now, whatever the activity you are going to do, that will be popped up here in the activity section. Whether you are going to do any kind of email to that client or call, or you are going to create a task, right? Okay. Everything will be displayed over here, Okay. step by step, so that you can have a proper analysis of, like, from where Perfect. it's been started and till now where we are, right? Perfect. This will be the detail page. If there is any contact which is connected with this deal, you can see on the right top corner the contact, right? Right. Same like that, you can get the company and tickets and all those things. No need Sure. of tickets for now. Now just go back to the deal. If you can see uh, on the left, top left corner, yeah, just click there. Now you can see the deal is being created in the first stage, Yeah. right? It can be easily drag and drop. Now you want to set up an automation where you want to send a notification to the deal owner, right? So for that, again, you have to go to the action from where you have Okay. updated the deal stages, yes, and go to add pipeline automation. Now there are two different criterias of setting up this automation or notification. Now, in which stage you want the notification to be sent to the owner? Definitely in the first stage, Yeah. right? Yeah. So just click on this create workflow Mm-hmm. inside the stage. So if you can see the first stage, Okay. yes, yes. Now setup, like you want to send an internal notification. Just Yeah. select that. Yes. Yes. So just select this one. Yeah. Okay. Now you have to select whom you want to send this notification, what will be the subject line, and what will be the body. Right. So if I am the sales owner, I would want to send this to. So I think every time if you are going to create a new deal, Mm-hmm. this will be assigned to that person only that you are selecting, right? What we can even do is every time new deal is being created, we can round robin this inside of your team member. So for example, there is 3 to 4 members and you want every new deal should be assigned one by one to everyone, right? Mm-hmm. So we can set up that automation as well, right? So if you want, we can That's tell a you. good idea, but in our team structure, we are following a member mapping. So with each sales team member, an operations associate is mapped. Okay, 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 got it, got it.
But in Okay. case So that team member is absent, I would want the other person to take over. So ideally, I think this should go to both the individuals. The concerned individual who's mapped will ideally take up the action. In case that person is absent, the alternate person, the backup person, will kick in. So can okay. I So map each and every deal to two individuals? yes, yes, yeah, definitely. You can Awesome. just click on the toggle. It will, yeah, select two. Okay. Okay. So what do I do next? Yes. Now go to the body. You have to mention the what you want to send in inside of that notification, right? Acha, okay, So sure. just scroll down. Just give a brief like this is a deal which has been assigned to you or something like that. Whatever the information you want to send. Okay. Okay. Now just go a bit on top. You need to write the subject line and those. Yeah. You can pick deal token as well. So you don't need to write the subject line. You can even, if you can pick the deal token, it will fetch the name of that deal. Oh. No, no, Mm. no. Okay, leave it. Just scroll a bit down. Let's see. Hmm. Okay, it will fetch the deal stage. Okay. So just write the name. Write the name of the deal. Yes, right. Now remove all these things which you have written. This. No, before the deal name that you have fetched the token. Yeah, just remove this. Okay, you removed all. Please select again. Deal name. Yes. Save it. Okay. Now this is the automation which is set up. Now every time when you are going to create a new deal, Hmm. it will send to the specific person that you have assigned. So again, so if you want to set up automation, Hmm. it should be like if one person has been assigned, then it should go to the second and third, right? So what, Hmm. Pankaj, if you are available, just let me know. Yeah, Gaurav. I was saying like, so every time if Shalini is going to create a new deal, Okay. this automation will not work because it will only assign this two person, right? It will basically just send the internal notification to them only. Yes, yes. So Yeah. what Shalini want I think is every time a new deal is created, Okay. it's that should not assign to the same person that we have selected in automation, right, Shalini? It should go to the entire team. The person who is mapped to that RM will automatically take it up. In case that person is absent, the backup person will take the charge. Okay, okay, okay. So we have created a team, right, or not till now? I don't think so. No, teams are not here because earlier in the free version they were not available to. Exactly, exactly. So let's do that first. Uh, okay, just go to the team. Now click on create team. There is no team created till now. And yeah, mention accordingly. So there will be a separate team for sales and separate for operations, right? Yeah, yeah. Okay. Now create one more team. I think we can create right now the operation as well. So in future, Shalini, who is going to operate this HubSpot? Like someone from your team or you will be there? So Ashna will be the first point of reference. She's Okay. an operations member. Okay. Okay. So She will what I be was responsible for expecting all of is configuration. okay. Okay. Perfect. Now you have added the operation and sales team. Now go back to the sales automation part, and inside of that automation, just go to action and automation, same like that. Action and Action automation. button, yeah. Seven. Yeah, exactly. Pipeline automation. Okay. Edit that first automation that we have set up. Just click on that action, yeah. You can choose the team now. Just remove those two persons from the users list and add the team here. Okay. Okay. Now what happened is every time the new deal is creating, the operation team will get the notification, They'll right? get an email notification. Yes, we have set up the email. All right. Even we can set up the Slack notification as well. That is a by default feature of HubSpot to automation. Slack. What is Slack not notification?
Slack is just like WhatsApp. We use Slack. Oh, So if there is any company who are using Slack instead oh, of WhatsApp, so they can send that notification on that as well. all right. So we'll have to download another app on our phone, and there the notification will come in. Is that right? Yes, yes. I think mail is pretty much enough to have a proper notification. Even they are going to get the notification on HubSpot as well. So Hmm. if they will install a HubSpot application on their phone, they will get the Okay. notification there as well. Ashna, do you need a WhatsApp kind of a notification as well? Yes, हाँ. That's also required. ठीक है. तो उसका भी process बता दो आप पंकज. हाँ, अगर आप चाहते हो WhatsApp notification, so for that, WhatsApp is a third party integration that we have to set up, Okay. and that is something which you have to purchase. That is a separate thing. Like All right. No, HubSpot do so not I, provide I, WhatsApp I said notification. WhatsApp likes. It doesn't really have to be Okay, WhatsApp. Whatever the inbuilt applications are, we can use those. okay. So just install the Slack. If you click on that automation again, there is an option called send notification on Slack. No, no, the Automation. automation which you have created, the trigger. This one? Yes, just click there. Just We have to cancel select this. I add think we have action. to go back. Sorry. Yeah, Pankaj. We have to just add the action. Click on that plus icon. No, A no. Over bit here? down. A bit down. Yes, Here? yes, yes, yes. Uh, See, uh, click on see more. yeah. See more. See more in the right, in the right, the See pop-ups that are more. there. Connect an app. Does this work? No, 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 no. Come a See bit down. more. Yes. Or you can type in the search Slack. No, no. I think Gaurav, we have to create an independent workflow for that. Like from this automation, I think the Slack channel notification will not be possible. We have to create an Okay. independent workflow for that. Okay. Let's tell them that as well, Pankaj. Okay. So, Shalini, just scroll up and just click on workflows part. Where do I go now? Workflows part on the top navigation bar. Where do, okay, over there. Yeah, this one. So what you have to do there, you have to just click on create workflow. That is on the top right Mm-hmm. corner. Click on scratch from scratch. Yeah, just select deal based. Click on next. Yeah, just select the trigger here that I think that whenever the deal will come into the first stage, Hmm. so click on setup triggers, Hmm. select deals. Like here you can choose multiple options, but we will select deals. Hmm. Search for stage. Yeah, deal stage. Is any of choose the first deal stage that will be appointment scheduled. On the top. Okay, Hmm. for the operations, then it is going to be case assigned to operations. Yeah, apply filter, click on save. Now just click on add action button. There's a plus icon. Yeah, scroll down here. Here you can see the multiple actions. So whenever you are going to just scroll down more, a little bit more. Yeah. So see, these are the default options. So whenever we are going to connect Slack with this, you can say this portal, then an option will create there. They create a notification for Slack. Then you have to just like just Gaurav told you to create an internal email notification step. Same we have to follow for the Slack notification itself. All right. Are these two options auto-enabled? Send internal email notification, send internal SMS, and in-app notification. Yes. See it. Yeah, yeah, Gaurav. Yes, you can use all the three of them. So are they enabled, or do we need to enable them? So for the basic one, I think first you need to connect your email. So every account, so for example, you have provided access to all your team members. Mm-hmm. You have to ask them like everyone should connect their email address, sorry, email ID with HubSpot. Okay. Even they can connect their calendar as well with HubSpot, right? So that every time if there is any meeting schedule, they can get the notification on Google Calendar. And Oh, so the first thing that we have to do is first we need to connect all the applications where we want to have a notifications and messages, right? all right. So we definitely need an email notification as well as maybe a Slack notification.
Okay, so what you have to do is first create an account on Slack, and after creating the account, we'll be connecting that account with HubSpot, right? So I have to download that app, right? Yes, 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 yes. How do you spell this? SLACK. Slack. Ashna, आप कर लो downloads. Can we do this simultaneously with the connectivity? No, first you have to create the account properly. Then inside of that account, like for example, if I talk about WhatsApp, so first you are going to create an account on WhatsApp, Mm-hmm. and then you will be creating a group, right? Okay. Even we can send it to individual as well, but in a group that will be good. So in a single group you can add multiple persons, right? And then with that group that we call channel in Slack, we can connect that channel with the further notification. All right. Can I do this online? Yes, definitely. Online possible. Slack download, right? Yes. Windows download. So every person should have that application in their system. Understood. ठीक है. Is it necessary to down? We can download on the phone as well, right? And still connect it from there. So for the phone, then we have to go back to the phone application of HubSpot, and then we can connect. अच्छा वो वहाँ से कनेक्ट होगी यहाँ से सिर्फ हमारी वेब एप्लीकेशन ही कनेक्ट होगी. हाँ, बट स्लैक हम यहाँ पे भी डाउनलोड करके मतलब यहाँ से भी कर सकते हैं, एंड वी कैन डू इट फ्रॉम फोन एज वेल, मतलब दोनों ऑप्शन अवेलेबल दोनों है. दोनों ऑप्शंस पॉसिबल जैसे है. हम व्हाट्सएप को यूज करते हैं ना, व्हाट्सएप वेब के थ्रू क्रोम पे, या तो वैसे हम स्लैक को भी कर सकते हैं. आप एक काम करो, आप स्लैक को प्रॉपरली पहले सेटअप कर लो. हम ठीक है. लोग इसको सेटअप कर देंगे नेक्स्ट मीटिंग में, कोई इशू Done. नहीं है, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा. ठीक है. Ashna, to download this application Slack, you can download it on phone or on your computer, laptop, and put in the accounts. Create a group for all of the team members. Okay. Then we will connect it to the HubSpot application. Okay. ओके, मैं अभी आपको बता देता हूँ कि हाउ वी कैन कनेक्ट द ईमेल, राइट? Hmm. बिकॉज दैट इज इम्पोर्टेंट. ओके, तो दिस इज अ प्रोसेस जो अभी आप सामने देख रहे हो ना, ये वर्कफ्लो है. वर्कफ्लो के थ्रू व्हाट वी डू इज वी क्रिएट अ ऑटोमेशन. लाइक अगर ये एक्शन होता है तो व्हाट वी हैव टू सेंड, अगर ये एक्शन होता है तो हमको अगला क्या एक्शन लेना है. इफ यू कैन स्क्रॉल अ बिट अप, सो यू कैन सी देयर इज ऑप्शन कॉल्ड इफ एंड एल्स एज वेल इन द वर्कफ्लो. इफ एंड एल्स branch a bit down, just a bit down. If you can just Yeah. this, right? So even we can set up like this, that if the deal is created in stage one, then the notification should send to this person. If the deal is moved from stage one to stage four, then the notification should send to another person. So this kind of thing you can easily play around with this workflows, right? Right. That is also नहीं तो इसका भी एक टेस्ट करके देखते थे. Branch हाँ. name one, filter type deal. Have to name this. Do I have to name? Yes, name is something which you can set up accordingly. Like, so you have set up a if else condition ना, तो Yes. यहाँ पे आपको अपने हिसाब से डिसाइड करना है कि if हमने क्या ब्रांच बनाया, then else if then like that. So if I do a case reassign to sales, तो उसमें आप एक्टिविटी क्या करना चाहते हो. हाँ वो सेल्स को नोटिफिकेशन जाएगी ना. हाँ, तो यहाँ पे आप पंकज, कैन यू हेल्प हियर? Yeah. So basically यहाँ पे आपको like you have to just set up a condition. Suppose you want that deal stage got changed to नो नो next नो, stage. पंकज, Yeah. इन्होंने कंडीशन सेटअप कर दी है कि अगर जो केस है वो रिसाइन होता है सेल्स को, तो ये नोट यहाँ पे एक नोटिफिकेशन जाए सेल्स टीम को, तो Yeah, एक he's टीम को understanding it Kitchen correctly. to the beach. No, वो no, no. उसके बारे में बता First, रहा Gaurav, we have to select that like any condition here. Like we haven't ओके. select any condition till now. यस यस, ओके. So first select deal. Suppose we are going with deal stages now. So select deal stages. We can use another property as well. Like we can use we can create custom properties and we can use there as well. है. Okay. So is any you can say got changed. Suppose to the next stage, right? Just select reassign to sales for instance. This one. Yeah. Click on apply filter. Click on save. Just scroll down. So here is the branch now. So suppose this condition will get through. You want to trigger a notification or you want to perform any kind of action, you want to create task or something, then you have to click on plus icon again. Which one? Over here, right? Yeah, the green one. Yeah.
Now like you can again set up the same action like send internal email notification, or you can just change this deal stage or create a task or whatever thing you want to perform here. Send internal email Send notification. internal email notification, you can do that. Choose And yeah, or I can choose a team. Yes. Just basically stocks की भेजेगा या ना delete करनी सारी मैंने भेजा है और सब डिलीट करने वाले yes, just place a subject line and a body. And as Gaurav earlier mentioned, that you can use the deal token as a personalization token. So you can do that as well. What was the deal token again? Deal token is basically that if you want to use any deal property, suppose the deal name that can be that will be dynamic according to the deal, it will get changed automatically. Okay. 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 That Got is it. just a simple thing like static and dynamic. Just Right. Understood. So that's actually better. I use the deal token. Okay, but I do need this. yeah. So just you can mention some content in the body and then we are good to go. Deal name assigned to deal owner would be a good idea. We can have two. Yes, yes, you can write anything ahead of that. Like We can have two deal tokens. Yes. Okay, that would be a good idea. All right. So this means that the email subject line will automatically be replaced by the deal name and deal owner, right? exactly. Makes sense. Makes sense. Makes sense. Is there a possibility to assign this to the original deal owner only? So this means that every case will go to all of the team members. I don't want that. Send to Uh, existing owners, right? This would be a good idea. yeah, if you want to see, if you want to send this notification, I want to send this notification to the deal creator and okay, the investment head or the team leader. okay. So just you can see, you can select deal owner here. Deal First, owner, though, deal owner to this was the person who the deal was assigned to. That is the operations team member. okay. So either we have to create some custom property for that, like deal is created by, and we can select user from there as well. And like we have to use custom properties here, Shalini, and then we can do that. Like they will choose that okay, the deal is created by this person and who is the team lead of that specific person. Then we can do that. So how do I do that? Can you help me with that? We need to create custom properties here. Just need to go back to the settings. I'll go तो back. शानली आई जस्ट लेट मी टेल यू द होल सिनेरियो उसमें होता क्या है कुछ by default properties that you are saying like deal owner and all those things this is a by default property that HubSpot created by itself right because every business have their own different situations so HubSpot also provide you can create your own custom properties that you can use right Hmm. तो उसके लिए पंकज आपको बता रहे हैं कि कैसे कस्टम प्रॉपर्टी हम क्रिएट करें Right. So जैसे deal owner था, isn't there a created token for the person who created the deal? so deal owner is by default a uh, who who created a deal नहीं, but deal owner में हमने उसको डाल दिया है ना, assign to operations डाल दिया है ना. yes 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 So for that itself, we need to create a custom property. Okay, Shalini. fine. ठीक है, बताइए how do we do that? Just go to the settings part. Yeah, select properties here. Scroll down under the data management. Uh, yeah, properties. Click on create properties. Uh, Click on create properties. On the top, on the right corner, you can see a button ECE को पूरा of नाम क्या create properties.
Yeah. First of all, select deal in object type. Yeah. Select a group that you can just choose deal information. Now select here like deal created by. Just give a label to this property. Yeah. Click on next. Now in this field, you have to select HubSpot user property. Click on this drop down and select HubSpot user. Yeah. Now click on create. In the same way, you can create a property for team lead as well. That who is the team lead of that कुछ ही particular deal owner or deal 14 को creator. निकाले नहीं। टीम लीड तो अभी एक ही है, तो उसको हम एक ही यूज करते हैं। हाँ तो एक ही है, देन हम उनको डायरेक्टली वहीं पे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, प्रॉपर्टीज की जरूरत नहीं है. राइट राइट। नाउ गो टू द वर्कफ्लोज अगेन. फुल डील्स ना, सेल्स सेल्स। No, no, workflows. अब Yeah. Uh, वर्कफ्लो। Click on this one, the unnamed workflow. Yeah. Now scroll down. अब हम फिर से वही एक्शन करेंगे, सेंड इंटरनल ईमेल नोटिफिकेशन वाला. यस. हाँ, अब जहाँ पे हमने नहीं नहीं यहाँ पे नहीं यूज हम लोग चूज करेंगे. अब हम लोग चूज एग्जिस्टिंग ओनर पे जाएंगे. आप चूज एग्जिस्टिंग ओनर पे जाइए. देखिए अभी तक आपको सिर्फ डील ओनर का ऑप्शन दिख रहा था. हम्म। अब यहाँ पे डील क्रिएटर का है. अब ये डील क्रिएटर आपको डील में मैनुअली आपको असाइन करना पड़ेगा कि डील किसने बनाई है. बट ये तो ऑटोमेटिकली सिस्टम को पता होगा ना किसने बनाई है। नहीं तो वही गौरव बता रहे थे कि जो भी डील क्रिएट करते हैं वो ऑटोमेटिकली डील क्रिएटर ओनर बन जाते हैं. बट इन केस इफ यू आर चेंजिंग दैट, हाँ। सो वो हमको कहीं ना कहीं स्टोर करना पड़ेगा. ओके ओके। तो उसके लिए आप लाइक एट द टाइम ऑफ डील क्रिएशन हम वो प्रॉपर्टी उनको फॉर्म में ही दे सकते हैं तो कि इसको ये थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं ना पंकज। डील ओनर, हम डील ओनर को हम डील क्रिएटर ही रहने देते हैं, और जहां पर हमने असाइन करी थी वहां पर हम चूज करते हैं ऑपरेशंस। ओके ओके इसको हम डील ओनर को एडिट करके हम इसको डिफॉल्ट ही रहने देते हैं, द पर्सन हु क्रिएटेड इट। ओके. तो फिर हम लोग को लाइक हम लोग इसमें चेंज नहीं करेंगे, जो भी बंदा डील क्रिएट करेगा वही डील ओनर है. हाँ, मगर यहाँ पर हमने ये प्रॉपर्टी जो डाली हुई है इसको हम डिलीट कर देते हैं। यूज या यूज द डील इज असाइंड टू। हाउ डू आई डिलीट दिस? See, this is the default property. Deal owner property is the default property that we cannot So I change. don't want to delete the default property. I want to delete the description. See, deal owner जो है हमारा, हाँ. जिसने डील क्रिएट करी, I want that person to wait. मगर हमने इसमें चेंज कर दिया। देखो, यूजर द डील इज असाइंड टू। सी देखिए हम जो HubSpot की कस्टम प्रॉपर्टी इनके सॉरी जो डिफॉल्ट प्रॉपर्टीज हैं इनके डिस्क्रिप्शंस नहीं चेंज कर सकते हैं. एक बार आप ये चीज़ खुद भी देख सकती है. अगर आप वापस हमको सेटिंग्स में जाके प्रॉपर्टीज में जाना पड़ेगा. नहीं, बट आप आपने तो कहा ना बाय डिफॉल्ट तो डील ओनर डील क्रिएटर ही होता है। नहीं नहीं आप ये डिस्क्रिप्शन चेंज करने की बात कर रही है ना. ये तो यूजर हमने चेंज किया है ना, यूजर द डील इज असाइंड टू। नहीं. आप एक बार ऐसा करिए, आप उसमें जाइए, वापस प्रॉपर्टीज में जाइए. सेटिंग्स। या सेटिंग्स एंड प्रॉपर्टीज में. वेयर डू आई गो टू? इंटीग्रेशंस। पंकज जी सॉरी there? सॉरी आई एम ऑन म्यूट. सबसे पहले कॉन्टैक्ट्स में डील सेलेक्ट करिए जहाँ कॉन्टैक्ट प्रॉपर्टी लिखा है वो ड्रॉप डाउन में. हम्म, या नाउ यहाँ पे डील ओनर सेलेक्ट करिए. सर्च कर okay, लीजिए आप. search, यू कैन okay. सर्च हियर. Pankaj, I have to leave. There is another meeting. Shalini, Pankaj will handle from here. Shalini, okay? Okay, श्योर no श्योर problem. श्योर. Okay. Thank you, guys. Bye bye. Thank you, Gaurav. Bye. Just open this property. Yeah, see, basically just click on basic info. Yeah, scroll down. I think this is the only see
This is the default description written. User the deal is assigned is to assigned to. assign additional user to deal record by creating a custom ठीक user है, तो property. इसका मतलब बाय डिफॉल्ट डील ओनर इज जिसको असाइन करी जाती है, सो इन दिस केस इट विल बी देखिए ऑपरेशनल। शालिनी जी, इसमें मतलब कई तरह के केसेस होते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे जो डील क्रिएट कर रहा है वो बाय डिफॉल्ट डील ओनर होता है, ठीक है। सेकंड, आप उसको कोई बाई रहने देते ना, दिस इज व्हाट आई वांट, डील क्रिएटर कोई डील ओनर रहने दे। नहीं नहीं तो मतलब आप ये डिस्क्रिप्शन हम चेंज नहीं कर सकते ना, ये तो मैं बोल रही हूँ HubSpot की डिफॉल्ट प्रॉपर्टी है। अच्छा, आई थॉट यू सेड कि डिफरेंट केसेस होते हैं, कहीं पर डील ओनर डील क्रिएटर भी होता है। नहीं नहीं, देखिए आप थोड़ा सा इसमें कंफ्यूज हो रही हैं। क्या? आप अभी डिस्क्रिप्शन मत पढ़िए। जो हम्म। भी जो भी ये डिस्क्रिप्शन लिखा है यहाँ पे, हाँ। आप इस डिस्क्रिप्शन को भूल जाइए। ओके। ठीक है, मैं जस्ट आपको ये बता रहा हूँ कि डील ओनर हम लोग कैसे कैसे सेट करते हैं हाँ। और कौन कौन हो सकते हैं। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, डील ओनर हमारा फर्स्ट पर्सन वो होगा, बेसिक जो होता है, अगर आप डील क्रिएट कर रहे हो यू विल बी द डिफॉल्ट डील ओनर, हाँ हाँ। राइट। दिस इज द फर्स्ट केस। सपोज आप डील क्रिएट कर रहे हो, आप वहीं से वो डील किसी और डील ओनर की, ये देखिए ये एक प्रॉपर्टी होती है, इसको हम चेंज कर सकते हैं। ओके। बाय डिफॉल्ट ये क्रिएट करता है जो डील उसी की रहती है। बाद में जैसे आपके केस में आप कह रहे हो कि आप उसको किसी और को असाइन करना चाहते हो, तो हम वो भी सेम चीज में कर सकते हैं। ओके। सेम प्रॉपर्टी में हम असाइन भी कर सकते हैं। ओके। सपोज एक आप सिंपल सा ये सिनेरियो समझ लीजिए, ये कागज है, हम पेंसिल से कुछ लिख रहे हैं, हम उसको रब करके उसको अपडेट कर सकते हैं। ओके। सिंपल एज दैट। तो अब अगर अगर इसमें ये पॉसिबिलिटी होती है कि हमको वहाँ पे किसी भी तरह का डेटा चाहिए होता है, लाइक अगर आप चाहते हो कि डील क्रिएटर या डील ओनर दोनों बाइफरकेटेड रहें, डिफरेंशिएटेड रहें, हम्म। तो हम वो भी कर सकते हैं। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जैसे जो मैंने कस्टम प्रॉपर्टी का तरीका बताया वो भी यूज करना पड़ेगा। हम्म। बट डील ओनर हम अकॉर्डिंग टू अस हम उसको चाहे डील क्रिएटर को ही रहने दें, चाहे हम उसको डिफॉल्ट मतलब चेंज कर सकते हैं, वो हमारे ऊपर है। ठीक है, सो अभी हमें क्या करना है, डील ओनर इज द डील क्रिएटर। तो इसको हम कुछ नहीं करेंगे, मतलब ये देखिए डिस्क्रिप्शन तो हम चेंज नहीं कर सकते, जो भी इस डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है। हाँ। बट बट बाय डिफॉल्ट जो भी डील क्रिएट करेगा, दे विल बी द डील ओनर। ठीक है, वो हम कैसे सिस्टम में सेट कर सकते हैं? सॉरी, वो सिस्टम में कैसे सेट कर सकते हैं? नहीं नहीं, देखिए वो हमको सेट नहीं करना शालिनी जी। ओके। ठीक है, तो उसको हम एज इट इज छोड़ देते हैं। नाउ वी अंडरस्टैंड दैट द डील ओनर इज द डील क्रिएटर, एम आई राइट? यस। ठीक है, परफेक्ट, ऑलराइट, सो लेट्स गो बैक टू दैट वर्कफ्लो। हम यहाँ पे थे, केस रीअसाइन टू सेल्स। तो इस केस में मुझे डील क्रिएटर और इन्वेस्टमेंट हेड दोनों को नोटिफिकेशन देनी है। हाउ कैन आई डू दैट? तो जस्ट आप क्लिक करेंगे सेंड इंटरनल नोटिफिकेशन सेंड टू एग्जिस्टिंग ओनर्स। जस्ट इस पे जब क्लिक करेंगे आप, तो यहाँ पे डील ओनर आपको सेलेक्ट कर लेना है, डील ओनर नॉट क्रिएटर, डील डील ओनर। ओनर, यस ये पर सेलेक्ट कर ये लीजिए। ये डिस्क्रिप्शन है, दिस विल नॉट मैटर देन? नहीं नहीं, डिस्क्रिप्शन कोई मैटर नहीं करता है, डिस्क्रिप्शन कुछ मैटर नहीं करेगा, वो जस्ट एक प्रॉपर्टी का डिस्क्रिप्शन है, उसको ऐसा उससे हो रहा कोई है मतलब सेंटिंग नहीं वगैरह है। उसमें। आप बोला डिस्क्रिप्शन भूल ही जाइए, आप उसको ठीक है, देखिए मत डील यूज। ओनर इज द पर्सन हु डील क्रिएटेड, इज दैट राइट? यस यस। आर यू श्योर और अबाउट दैट? ठीक है, एक बार इसको टेस्ट करके देख लेते हैं। आई एम श्योर अबाउट दैट। ठीक है। देन जस्ट क्लिक ऑन सेंड टू जस्ट सेलेक्ट हाँ, यूजर्स एज वेल। यहाँ पर आई आल्सो वांट दी सेंड टू एग्जिस्टिंग यूजर्स, यहाँ पर इसको इन्वेस्टमेंट हेड को भी इंक्लूड करना है मैंने। सो बोथ ऑफ दीज विल कम इनटू द पिक्चर, राइट? या ठीक है। सब्जेक्ट में यहाँ पर आपने डील टोकन बताया था, डील स्टेज हमने डिसाइड किया था ना, डील 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 स्टेज एंड डील ओनर। या डील स्टेज नहीं, बता देते हैं। या सेव। या
तो ये यहाँ पे हो जाता है। अब आप जो एक चीज आप चेक करना चाह रहे हो कि बाय डिफॉल्ट जो डील क्रिएट करता है वही डील ओनर होता है। हाँ हाँ। आप बैक टू वर्कफ्लो पे जाइए। आप सेल्स मतलब यहाँ से बाहर आ जाइए, सेल्स पे क्लिक करिए, ओके, डील्स। ऑन डील्स, यस। Hello. Hello. Now click on create deal on the top right, on the right corner. कौन सा? So just place a deal name. यहाँ पे कुछ डिफरेंट कर दे, हाँ। हाँ वो जो अब आप स्क्रॉल डाउन करेंगे अगर, हम्म। सी ये बाय क्या बता डिफॉल्ट रहा आप है डील क्रिएट कर रहे हो, डील ओनर शालिनी कह रही है। अच्छा, ठीक है। अब अगर आप इसको चेंज कर दोगे तो कोई और हो जाएगा, अच्छा, ठीक है। अगर नहीं चेंज करोगे तो डील ओनर आप ही रहोगे। डन डन डन। ठीक है, मेक सेंस। या सो मतलब इस तरह से ऑटोमेशन से आप जितनी भी डील स्टेजेस हैं उनमें आप ऑटोमेशन सेट कर सकते हो नोटिफिकेशन के लिए, या जैसे अभी आपको इफ देन ब्रांच बताया तो कंडीशन दिया, अच्छा रीअसाइन टू सेल्स फॉर असिस्टेंस में है तो क्या मेल भेजना है, अच्छा नहीं दूसरी स्टेज में है तो क्या मेल भेजना है। इस तरह करके आप बाइफरकेट कर सकते हो चीज़ें। Acha, I want to test now. Has Ashna got a notification for the first deal that we have created? Did we make that workflow live? uh, नहीं, ऐसे तो मैंने नहीं किया। just go to the settings, just go to the automation pipeline automation, sorry. Go to the pipeline automation. Under settings only? Yeah, click on action from where you have just click on action that Gaurav is telling you how to add the pipeline automation. Hmm. Okay. Scroll down, this one is pipeline automation. Okay, so I think this will be workflow like you have created deal previously and after created this workflow, or you have created workflow then you have created deal? नहीं, पहले डील क्रिएट करके फिर वर्कफ्लो डाला था। हाँ तो फिर से एक बार वर्कफ्लो बनाइए आप, मतलब सॉरी डील क्रिएट करिए। फिर से एक नई डील क्रिएट करा। You can just create it directly, no need of Okay. Okay, now what do I do? okay now you like there's no need of doing anything. Just again go to the pipeline automation, just let me check one thing. सेटिंग्स में कहाँ थी पाइपलाइन ऑटोमेशन? Action. यहाँ से Okay, यहाँ से भी आप कर सकते हो। यहाँ से कर सकते हैं। Scroll down, इधर। automatic, scroll down, ओके। just click on open in workflows. यहाँ पे देख रहे हैं आप लिखा हुआ नीड मोर एडवांस फंक्शनलिटी, ओपन इन वर्कफ्लोज। ओके, हाँ तो यहाँ पे भी इनको आ जाना चाहिए, जो भी आपने लोग मेंशन कर रहे हैं यहाँ पे उनको मेल ट्रिगर हो जाना चाहिए। हम। आप ये चीज़ ऐसे भी चेक कर सकते हो, अगर आप डिटेल्स में क्लिक करोगे सबसे ऊपर लेफ्ट कॉर्नर में आप देखो, हम्म। क्लिक करिए, आप एक्शन लॉग में जाइए। इधर। नहीं एक्शन लॉग यही देखिए जहाँ पे स्किप टूल का ऑप्शन आ रहा है, स्क्रॉल डाउन करिए। देखिए अभी आपने जस्ट एक बनाई थी क्रिएट इवेंटेड फॉर पुनीत खोसला, हम्म। इंटरनल नोटिफिकेशन शूट हो गया। हम्म। अब आप चेक कर सकते हैं जो जिन जिन बंदों को आपने वहाँ कॉन्फ़िगर किया था कि उनको ईमेल मिला कि नहीं मिला। There. Ashna, have you got an email? Yes, ma'am, I have received. You would have received two emails, right? Yes, ma'am. For both for INA and ACH. ठीक है, परफेक्ट परफेक्ट। और क्या कर सकते हैं? सो वन इज एन ईमेल नोटिफिकेशन, ईमेल पे वो वर्क करेंगे। एंड वो डील्स पे भी जाकर देख सकते हैं, राइट? या
ठीक है, so under deals they should be able to show, they should be able to see all of this, है ना? Yeah, ठीक है, so एक बार उन्होंने IIN इसका create कर दिया, so they'll move this to customer response ऐसे, right? yeah. हम्म, ठीक है, ठीक है, I think this makes a lot of sense. हमें बाकी सारे वर्कफ्लोज क्रिएट करने में उसमें भी हेल्प कर दो पंकज। श्योर श्योर, हम लोग आप पहले लिस्ट आउट कर लीजिए कि आपको कितने वर्कफ्लोज बनाने हैं, लाइक मुझे जितने हर भी। डील स्टेज के लिए चाहिए ना, किसको साइन होगा? सॉरी। मुझे हर डील स्टेज के लिए चाहिए ना कि किसको साइन हो रहा है केस। हाँ मतलब आपको, मतलब वही मैं कह रहा हूँ, आपको जितने भी वर्कफ्लो चाहिए उन वर्कफ्लोज में आपको क्या क्या चाहिए, राइट? कि जैसे मान लीजिए फर्स्ट वर्कफ्लो में आपको क्या चाहिए, फर्स्ट स्टेज के लिए, सेकंड स्टेज के मुझे लिए, वो थर्ड। ईमेल नोटिफिकेशन ही चाहिए। तो आप जस्ट इसको एज इट इज रेप्लिकेट कर सकते हो, जो ये वर्कफ्लो मैंने भी आपको बताया है बनाने को। ओके, या क्लोन। तो या हाँ, ये डायरेक्टली आप यहाँ से क्लोन कर सकते हो, नहीं तो पाइपलाइन ऑटोमेशन में जाके हर स्टेज पे वो बना सकते हो। अच्छा, सो इफ आई डू अ क्लोन, इसको पहले तो नेम कर लेते, राइट? इज देयर अ वे टू, ओके वी कैन एडिट दिस ना? या अच्छा हाँ, हमें हमें वो भी बनाना है, इफ नॉट वाला भी करना है। नन नन मेट, अगर यहाँ पर पड़ा रहा 3 days तक या 1 day तक, so then it needs to move on to the next level. तो देखिए उसके लिए एक होती है, जैसे आपने माना कि ये आपने कर दिया कि डील स्टेजेस एनी ऑफ केस असाइंड टू ऑपरेशंस पाइपलाइन। अब आप चाहते हो कि केस असाइंड में अगर वो 2 दिन तक पड़ा है तो किसी को नोटिफिकेशन चला Yeah, जाए, या yeah. कुछ, या कुछ, या किसी काइंड का वो हो जाए, हम्म। क्या बोलते हैं, हाँ, तो आई थिंक यहाँ पर हम कर पाएंगे ना उसको। यहाँ पे हमको डिले लगाना पड़ेगा, डिले फॉर अ सेट अमाउंट ऑफ टाइम। यहाँ पे सेट करिए डिले फॉर अ सेट अमाउंट ऑफ टाइम, सबसे पहला ऑप्शन जो होगा। ये ओके। अब यहाँ पे आप डे सेलेक्ट कर सकते हैं, सपोज 1 डे, 2 डे, 3 डे, जितने का भी आपको डिले चेक करना है। ठीक है, अगर एक दिन तक पड़ा रहा। सेव करिए। अब हम्म, यहाँ पे आप वापस चेक करोगे, ये जो इफ देन ब्रांच आपने लगाई है, यहाँ पे आप चेक करोगे कि क्या स्टेज अभी भी वही है। नहीं नहीं, ऊपर ऊपर ऊपर, ये इफ देन ब्रांच में कि क्या स्टेज अभी भी केस असाइंड ही है। अगर वो ट्रू होती है कंडीशन, तो आप उसको चाहे दूसरी स्टेज में मूव करना चाहो वो कर सकते हो, या फिर आप चाहते हो कि किसी को इंटरनल नोटिफिकेशन चला जाए वो भेज सकते हो। अगर वो कंडीशन फॉल्स होती है दैट मीन्स कि वो स्टेज से मूव कर चुकी है। और ये चीज़ आप हर स्टेज के लिए कर सकते हो। हाउ डू आई सेट दैट अप? डिले फॉर, सो वील गो फॉर एक्शन, राइट? या नहीं 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 नहीं, डिले डिले तो आपने लगा दिया ना ऑलरेडी। या या अब अब इसके यहाँ पे बाद मुझे नोटिफिकेशन भेजनी है, नाउ द नोटिफिकेशन नहीं हैज नहीं, टू तो गो बैक वो टू सेल्स। अब देखिए लॉजिक क्या होता है। आपने आज देखा कि आज वो डील आई है केस ऑपरेशन, केस असाइन टू ऑपरेशन स्टेज में, ठीक है। आपने एक दिन का डिले लगाया, एक दिन के बाद आप फिर से ये चेक करोगे ना कि वो अभी भी उसी स्टेज में है कि नहीं है, तभी तो आप हम्म नोटिफिकेशन भेजोगे। तो हम्म। जो इफ देन ब्रांच लगाई है इसको आप एडिट करो, इसको यहाँ पर एड करें। या आप डायरेक्टली उस पर क्लिक कर दोगे वो ओपन भी हो जाएगा। स्क्रॉल डाउन, अब यहाँ पे डील स्टेज, फिर से नीचे जो डील स्टेज है आपका, देखिए वो ब्रांच नेम कुछ भी रख सकते हैं, वो ब्रांच नेम आपके ऊपर है, डजंट मैटर। हम्म। इस पे क्लिक करिए, डील स्टेज पर। मतलब कहीं होगा तो डील स्टेज किसी प्रॉपर्टी पर नहीं, कहीं और। हम्म। या अब यहाँ पे डील ये क्रॉस करके दूसरी सेलेक्ट करिए, अच्छा, इज एनी ऑफ जहाँ लिखा है, इस ड्रॉप डाउन में से इसको होगा। क्रॉस कर दें। हाँ, अब यहाँ पे क्लिक करिए, उस पर क्लिक करिए किस वापस, पे क्लिक करूंगा, इस पर? इसी ड्रॉप डाउन पे। अब वो सबसे जो स्टेज आपने ऊपर चुनी केस असाइन टू ऑपरेशन, वो स्टेज अच्छा, चूज करिए, ये चाहिए। अपडेट फिल्टर करिए, सेव करिए। अच्छा, मतलब 1 day के बाद भी इट इज स्टिल, नो दिस अगर इज नहीं केस नहीं, ऑपरेशन। केस असाइन टू ऑपरेशन, अगर यहाँ वो पे ब्रांच नेम चेंज कर दो तो फिर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो रहा है। नहीं, देखिए ब्रांच नेम, ब्रांच ब्रांच नेम उसी के लिए होता है, वो आपको जैसे भी रखना है वो आप चेंज कर सकते आई हो। कैन चेंज दिस ना कि यस यस यू केस नॉट वर्कड अपॉन। कैन, यस। ओके,
Now what do we do? Save. Yeah, click on save. Okay. Case not worked upon आ गया. Send internal अब यहाँ पे notification. आप वो इंटरनल नोटिफिकेशन भेज सकते हो किसी को। Right. Send to users Preeti Divakar and send to deal owner. अब इसी तरह आप चाहो हर स्टेज के लिए बना सकते हो, आपको बस ये वर्कफ्लो क्लोन करना है और खाली स्टेज नेम चेंज करना है बस। Hmm. इसको हम सेव कर देते हैं रिक्वेस्ट सेल्स असिस्टेंट में. यहाँ पर हम लिख देते हैं केस नॉट वर्क. डील स्टेज इट विल ऑटोमेटिकली चेंज. ठीक है. Save. ठीक है. प्रोसेस और भी हमने कुछ वर्कफ्लो बनाया था यहाँ पर. वन सेकेंड में आपके लिए वर्कफ्लो दिए थे मैंने. एक ये रिपोर्ट वाला पार्ट था। नहीं, रिपोर्ट से पहले मैंने और भी वर्कफ्लो जो दिया हुआ था. आई नीड टू इंश्योर दैट द एंटायर वर्कफ्लो इज अपडेटेड. वन सेकेंड. या ओके. प्रायोरिटी लेवल तो हमारे पास है. ओके. नाउ आई नीड टू मेक दीज चेंजेस. अगर प्रायोरिटी लेवल हाई है तो एस्केलेशन टू इन्वेस्टमेंट हेड इन T+1 जो हमने कर दिया है. ठीक है. प्रायोरिटी मीडियम है तो एस्केलेशन टू इन्वेस्टमेंट हेड इन T+2. प्रायोरिटी लो है तो T+3 में करना है. ठीक है, ये वर्कफ्लो भी बन जाएगा। इसको हम क्विकली देख लेते हैं, उसके 12 बजे से भेज के दूसरे मीटिंग में कि मतलब एक में मीटिंग और आप आपसे ये होगी। सेटअप करके दे सकते हैं मेरे को. सॉरी। आप ये सेटअप करके दे सकते हैं हाँ मेरे को. ठीक है, ये वर्कफ्लोज मैं आपको सेटअप करके दे दूंगा। ठीक है, परफेक्ट. मैं इसमें आपको कुछ चीज़ें बतानी भी होंगी क्योंकि आप लोग को प्रायोरिटी वहाँ पे मार्क करनी होगी कि अगर इस कोई भी डील आप बना रहे हो तो उसकी प्रायोरिटी क्या है, हाई है, लो है या मीडियम है। तो उस बेसिस पर जो प्रायोरिटी होगी उसके बेस पर ये वर्कफ्लोज रन करेंगे। ठीक प्रायोरिटी है। हमने डील में डालनी शुरू कर दी है. सो डील में आई पुट अप द ऑप्शंस ऑफ प्रायोरिटी एज वेल. या सो दैट्स गुड, दैट्स ग्रेट। सो वही मैं कर रहा हूँ, वहाँ से हमको करना पड़ेगा। उसके बाद रिपोर्ट्स में मुझे कुछ डिस्कस करना है आपसे। हाँ, रिपोर्ट बताइए. उसके लिए थोड़ा सा लंबा डिस्कशन होगा। हम्म. तो आई विल शेड्यूल अ मीटिंग फॉर टुमारो फॉर मे बी अराउंड, जस्ट लेट मी सी माय कैलेंडर। टुमारो इज 9, राइट? टुमारो. Can we do it around 1 p.m. if you are available? मैं देख लेती हूँ अपना कैलेंडर. Yeah, please. पर था पर हाँ, 1 o'clock शेड्यूल कर सकते हो. बिटवीन 1 to Okay, 1. ठीक है। I will schedule a meeting at 1 o'clock and we will discuss on this part and that Report as well. report Report, as well. and you'll also Yes. create these workflows for me. Yeah. I will just create one or two workflow and then you can like I will give you a brief that how you can create it. So in future, if you want to do any changes, you can do it. हाँ, ठीक है. फ्यूचर का तो आप बता देना. आई एम रिकॉर्डिंग दैट सेशन एज वेल. Okay. बट आई नीड दीज वर्कफ्लोज टू बी क्रिएटेड. जो मैंने ये भेजा ना, ये Okay. दिस Okay. टू बी सेटअप. Okay. Okay. Sure. ये हो जाएगा ना. Yeah. This will be done. परफेक्ट. आशना, मीनवाइल यू आल्सो सेट अप द स्लैक अकाउंट. स्लैक को भी इंटरकनेक्ट कर देंगे. ओके. ठीक है. लेट्स मीट टुमारो एट 1 o'clock then. Okay. Send me the. Thank you, Pankaj.